welcome back to this session. Today in this session, we'll be starting a new unit, that is unit number 5, bending and shear stresses in beams. Now, as we know that हमने pre units पे जो unit number 1, 2, 3 and 4 पे जो भी हमने पढ़ा वहाँ पर हमने पढ़ा कि जब भी कोई भी material under any load के अंदर आते हैं तो material इधर expand हो जाते हैं या इधर it contracts, right? So अगर if the material expands, then the material is said to be under a tension force. If it contracts, then it comes under compression, right? So similarly, a moment acts on the beam, then the beam tends to bend. Whenever there is a force acting on a beam, because of the force, there will be moment, and this moment will bend the beam. So there is a bending action in the beam. So similarly, there will be shear forces, torsional forces, then combined loading. If अगर एक से ज़्यादा लोड एक ही मटेरियल पे लगते हैं तो उस पे combined loading आते हैं. And in previous chapter, that is unit number 4, shear force and bending moment, in that unit we have seen that shear forces and bending moments are produced at each cross section of the beam when it is subjected to external loading. तो हमने जब भी वहाँ पर वो चैप्टर पे shear force और bending moment हमने कैलकुलेट किया था तो वहाँ पर हमें दिखाई दिया था कि each section पे if there is a length of a beam, तो length of a beam पे हमें section पे हमने shear force और bending moment find किया था, right? तो हमने वहाँ पर दिखाई दिया था कि each sections पे bending moment भी आते हैं और वहाँ पर shear forces भी आते हैं जब वो beam is under the action of a external loading. So a beam gets bent up or deformed when subjected to bending moment and shear force. हमें वही दिखाई दिया कि जब भी कोई भी लोड आते हैं बीम पे तो बीम वो deform होने लगते हैं और जब deform होते हैं तो वो उस पे moments आते हैं, right? और वो किसकी वजह से आते हैं? जो moments आते हैं वो because of the applied force which creates bending moment and because of the shear forces that is coming from the beam, right? So as it undergoes the deformation, internal stresses, internal resistance are set up, and the process of deformation stops when every cross section sets up full resistance to shear force and bending moment acting on it. और जब भी वहाँ पर वो बीम पे जब भी लोड लगते हैं तो उसकी वजह से बीम पे डिफॉर्मेशन आते हैं और जब बीम पे डिफॉर्मेशन आते हैं तो बीम का खुद ही की मटेरियल से वो जो भी डिफॉर्म हो रहा है एक्सटर्नल लोड की वजह से तो बीम का खुद ही मटेरियल जो होते हैं उससे रेजिस्टेंस देते हैं. मतलब जो लोड ऊपर से लग रहा है बीम के ऊपर तो रेजिस्ट करने के लिए बीम के मटेरियल जो बीम जिस मटेरियल से भी वो बीम बना है वो मटेरियल वो रेजिस्ट करने के लिए ट्राई करते हैं. प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन स्टॉप्स ओनली व्हेन द रेजिस्टेंस जो बीम रेजिस्टेंस लेते हैं उसका जब कैपेसिटी बंद हो जाते हैं. मतलब at one point it will not be able to take any more shear forces and bending moment acting on it. Till the time it can take, it will keep on deforming. So after it reaches its maximum capacity तो वहाँ से ज़्यादा force लगा तो there will be a failure in the structure, right? The stresses induced to resist the bending moment are called as bending stresses, and the stresses induced to resist the shear force are called shear stresses or shearing stress. So bending action in beam is called as flexure. अब हमें पता है कि beam पे there will be a bending action, and that bending action in a beam it is called as a flexure. So in this topic we shall study the flexural formula. अब हमें पता है कि beam पे फ्लेक्चर होते हैं और बीम पे जो फ्लेक्चर फॉर्मूला आने वाला है जिसको हम बेंडिंग इक्वेशन भी बोलते हैं. सो वी विल स्टडी अबाउट इट एंड its application to symmetrical and unsymmetrical sections.
So let us go ahead. So the first one is concept of pure bending. Now let us consider a simply supported beam of span L. आपको वहाँ पर diagram दिखाई दे रहा है. There is a simply supported beam and let us consider its span to be equal to L. And let us consider that it is all as already shown in the diagram that there are 2 point loads. 2 point loads वहाँ पर दिया है, right? And जो 2 point loads दिया है from the support A से उसका distance A पे है और B से भी जो point load place किया गया है B से the distance is at A, right? So from this simply supported beam, the shear force diagram and the bending moment diagram is also given, as you can see it in the figure here. So here, this is the beam here, and for this beam the shear force diagram and the bending moment diagram is shown, right? So from the shear force diagram, it can be seen that there is no shear force at all sections between C and D. Now आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि between this section C and D, there is no shear force acting. तो only in section A and C पे एक shear force है और D and B पे shear force है. So again from the bending moment diagram, we can see that there is a constant bending moment है. मतलब यहाँ पर जो C पे WA लगा है, D तक पहुँचते पहुँचते वो WA ही है. मतलब the force that is the bending moment that is coming on this beam is constant from C to D, right? And this is equal to W into A. Now in this case, the portion CD, now जो portion यहाँ पर CD portion है, the CD portion of this beam between the two downward load is subjected to pure bending, right? अब ये portion जो CD portion है, between this CD portion where the beam is subjected to this 2 point loads, the beam is subjected to pure bending, और इसको हम pure bending को simple bending भी बोलते हैं, okay? Pure bending or simple bending. So when the beam is subjected to pure bending, it bends or deflects into an arc of a circle. Arc क्या है? Arc is something like this. So जब भी कोई भी load लगते हैं और वो जो load आ रहा है, if that load is the pure, because of that load जो भी downward बेंडिंग आते हैं और उसको जो प्योर बेंडिंग होते हैं या सिंपल बेंडिंग आते हैं, उसकी वजह से जो भी डिफ्लेक्शन आते हैं, that deflection forms into an arc of a circle, right? So a beam subjected to pure bending has only normal stresses of tensile or compressive nature set up in it. So जब भी कोई भी beam pure bending पे subject होते हैं तो उसपे सिर्फ normal stresses produce होते हैं, normal stresses of either tensile nature or a compressive nature, depending upon what kind of load is acting. Or and अगर if a beam is subjected to ordinary bending, तो ordinary bending पे क्या होते हैं? Ordinary bending पे दोनों ही normal stresses and shear stresses दोनों आते हैं, okay? So in pure bending shear stresses नहीं आते हैं, shear stresses नहीं आते हैं, सिर्फ normal stresses आते हैं. And a beam subjected to ordinary bending पे दोनों ही आते हैं, normal bending पे आते, normal stresses भी आते हैं और shear stresses भी आते हैं, okay? Both the stresses comes in normal bending. Now let me read here. So the length of a beam is subjected to zero shear force and constant bending moment. Then the length of the beam is subjected to pure or simple bending. इस पे क्या बोल रहा है? जब भी कोई भी beam is subjected to zero shear force, अगर कोई भी shear force यहाँ पर देखो C and D के बीच पे कोई भी shear force नहीं लग रहा है और ये CD portion is a portion of a beam which is subjected to pure bending, मतलब ये CD पे कोई भी shear force नहीं लग रहा है, मतलब shear force is zero, और ये portion CD पे you have a constant bending moment from point C to D पे constant है. तो अगर ऐसा है, then this length, CD length of the beam is subjected to a pure or a simple bending.
So I hope this concept is clear. Next we have a theory of pure bending again. Now as you can see in this diagram here, in the first diagram, A diagram, you can see a simply supported beam here, and this simply supported beam is subjected to a UDL. Now because of this UDL, there is a bending moment here, right? So we know that the beam bends under the action of vertical loading on it, right? A simply supported beam bends in a sagging pattern. जो यहाँ पर बेंडिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम सैगिंग बोलते हैं. ये पूरा जो बेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, दिस इज अ सैगिंग पैटर्न, और सैगिंग इज अ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट. Okay, let us consider the bending pattern of a simply supported beam under the action of vertical loading in it, right? So this is a action of a bending moment in a simply supported beam when it is subjected to any kind of loading. The fiber in the lower part of the beam undergo elongation, while those in the upper parts are shortened. Now ये जो यहाँ पर आपको ये पूरा diagram दिखाई दे रहा है, ये diagram is a diagram where a simply supported beam is undergoing a action of a bending moment. So जब उस पे moment आते हैं bending moment, तो जब भी वो वहाँ पर bend हो जाते हैं beam, तो जो भी ये lower fiber है, आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, this is the lower fiber. ये lower fiber पे लेंथ इंक्रीज हो जाते हैं और वहाँ पर टेंशन आते हैं. सो जहाँ पर लेंथ इंक्रीज होते हैं वहाँ पर टेंशन जोन फॉर्म होते हैं, और ये अपर फाइबर जो है इस पे लेंथ कम हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, और वहाँ पर कंप्रेशन जोन आते हैं. ओके, सो दिस चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द फाइबर सेट अप टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन द फाइबर. अब जब ऐसे बेंड हो जाते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस changes in the length, वहाँ पर tensile and compressive stresses आते हैं. So the fiber in the dotted centroidal layer are neither shortened nor elongated. Now आपको यहाँ पर dotted line दिखाई दे रहा है. This is a neutral axis line. इसको हम neutral axis बोलते हैं. अब ये neutral axis जो यहाँ पर exactly बीच का है, this neutral axis will not undergo, it will not be shortened और it will not be elongated. ये कम भी नहीं होगा, ये बढ़ेगा भी नहीं, तो ये as it is रहेंगे. as normally पहले before bending beam का length कितना था वो इतना ही रहेंगे at a point of this, at this point which is called as a neutral axis line. Okay, so the centroidal layer which do not undergo any extension or compression is called as a neutral layer or neutral surface. इसको हम neutral layer भी बोल सकते हैं और neutral surface भी बोल सकते हैं. The intersection of the neutral layer with any other normal cross section of the beam is called as neutral axis, right? तो हम इसको neutral axis बोलते हैं. All the layers above the neutral axis are under compression. अब ये neutral axis के ऊपर जो भी layer है, it is under compression, and all the layers above this neutral axis are they are under tension. Okay, hence the compressive stresses are developed in the upper layer of the neutral axis and the tensile forces are generated below the neutral axis. So this is what happens in a simply supported beam. Okay, so now let us see what happens in a cantilever beam. Now you see this is a cantilever beam here. Cantilever beam is a beam where one end is fixed and other end is free. अब यहाँ पर एक end fixed है, other end free है. And when a load acts upon this cantilever beam, then it will bend in this manner. ये यहाँ पर bend ऐसे होंगे, और this kind of bending is called as a hogging. Okay, hogging, and जो hogging moments आते हैं, bending moment, these are negative, right? तो जब भी आपने bending moment diagram for cantilever draw किया, तो every time when we were finding it, it was coming in negative. So these are negative bending moment, which also called as a hogging. Okay, so the bending pattern of a cantilever beam is exactly opposite to that of a
सिंपली सपोर्टेड बीम. सिंपली सपोर्टेड पे पॉजिटिव आ रहा था, सैगिंग आ रहा था ऐसे, राइट. अब ये कैंटिलीवर बीम पे हॉगिंग नेचर पे आ रहा है ऐसे. सी, सो इट हैज बिकम हॉगिंग नेचर हियर. सो फॉर द कैंटिलीवर बीम, the tension zone is above the neutral axis, whereas the compressive zone is below the neutral axis. अब यहाँ पर you have a neutral axis, और neutral axis के ऊपर जो रहते हैं यहाँ पर tension zone रहते हैं, और neutral axis के below compression zone, right? Simply supported केस पे क्या था, जो भी zone neutral axis के ऊपर था उस पे compression था, और जो भी zone नीचे था उस पे tension था. तो यहाँ पर it is right opposite of a simply supported beam. So as you can see in this diagram here, cantilever beam subjected to a loading and it will give a negative bending moment. Now, assumptions in the theory of simple bending. So this is very very important assumptions. जब भी आप हम when any material, when any beams undergo a bending moment, तो उस पे we need to find a flexural formula, right? तो वो find करने के लिए there is the assumptions made in the theory of simple bending of a beam. So let us see what are these assumptions. So practically there are 7 assumptions here. Or the first one, it says the material of the beam is homogeneous and isotropic. This is simple to understand. It means that जो beam का material है, it should be homogeneous and isotropic. Homogeneous means it should be made out of the same material. Okay. So second one, the beam is straight before loading and is of uniform cross section throughout. तो वहाँ पर एक beam है, अभी वो beam पे load नहीं आया है, तो before loading the beam is of a uniform cross section throughout. उसका cross section जो है वो same रहेंगे throughout the length of the beam. Okay. The beam material is stressed within its elastic limit and thus obeys Hooke's law. Okay. तो जब भी beam का material elastic limit तक stress होते हैं तो तब तक it will obey the Hooke's law. Okay. And जब हम elastic limit cross करके आगे चले जाते हैं उस पे plastic limit आ जाते हैं, तो plastic limit पे permanent deformation होते हैं, और उस टाइम पे it will not obey a Hooke's law. It will obey Hooke's law only up till the elastic limit. Okay. Fourth point says the transverse section which were plane before bending remain plane after bending. तो जो transverse sections है, those transverse section which were plane before bending will remain plane after bending also. Okay. Fifth one says the beam is subjected to pure bending. आपको pure bending का concept पता है. Sixth पे each layer of the beam is free to expand or contract independently of the layer above or below it. तो जब भी beam undergoes any kind of action, तो the beam is free to expand or either contract. Okay, they are independent. Seventh one, Young's modulus E for the beam material has the same value in tension and in compression. तो beam जब भी bend होता है, we know that simply supported beam bend हुआ तो it will have a sagging nature, sagging bending moment, and cantilever का beam deflect हुआ, bend हुआ तो उस पे hawking nature का bending moment आते हैं. तो वहाँ पर दोनों पे compression zone and tension zone आते हैं. Now अगर हमने compression and tension zone पे हमने Young's modulus consider किया beam के लिए, तो दोनों zone पे हम Young's modulus हम एक ही value लेके जाते हैं. Now next is a flexural formula. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो. Now let us consider a slice. अब यहाँ पर इतना slice पे A, B, C and D, ये एक हम एक beam का section मान लेते हैं, and it has a small length. उसका length जो है let it be dx length, right?
and let us say that this beam is simply supported beam and it is subjected to a bending moment m. ये simply supported beam है और उस पे bending moment, यहाँ पर आपको moment दिखाई दे रहा है, उस पे bending moment m आ रहा है. Okay, so now it is obvious that AB is equal to GH is equal to EF is equal to CD. तो ये यहाँ पर जो है it is constant, मतलब ये beam before loading it should have a same length throughout, right? तो यहाँ पर इनका length same है. So now as you can see this EF portion here is a neutral axis portion here, right? अब जब ये beam bend हो जाते हैं, जब उस पे लोड लगते हैं और मोमेंट आते हैं और बेंड हो जाते हैं, so you can see this diagram D here, beam after bending. तो यहाँ पर जब भी जो भी मोमेंट प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर सैगिंग नेचर का मोमेंट प्रोड्यूस होते हैं. और यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सिस लाइन है, न्यूट्रल एक्सिस लाइन के ऊपर यहाँ पर you will have a compression zone and below this neutral axis line here you will have a tension zone. This is for a simply supported beam, right? Now यहाँ से आपको पता है, यहाँ से मोमेंट जब बेंड होते हैं तो सिंपली सपोर्टेड के लिए it will form this kind of bending moment. Okay, now if we have to draw a strain distribution diagram, so we draw it in this manner. So in this strain distribution diagram, bending moment पे क्या हुआ था, जब न्यूट्रल एक्सिस की लाइन के ऊपर you had a compression zone here, right? तो जो न्यूट्रल एक्सिस की लाइन के ऊपर है compression zone, तो वहां पर न्यूट्रल एक्सिस की लाइन के ऊपर यहाँ पर भी you will have a strain in compression. EC here means strain in compression. और ये जो आपको YC दिखाई दे रहा है, from the neutral axis till the top of this section here, diagram here, is a distance YC. This means that this distance is in compression. Okay, similarly यहाँ पर ET दिखाई दे रहा है, तो जो यहाँ पर मोमेंट पे जो भी यहाँ पर बेंड हुआ है उस पे न्यूट्रल एक्सिस के लेयर के नीचे आपको टेंशन जोन आएंगे, राइट? तो यहाँ पर बिलो दिस न्यूट्रल एक्सिस वी हैव अ tension zone, and in tension zone the strain produced are known as strain in tension. और जो न्यूट्रल एक्सिस के लाइन से आपको ये डिस्टेंस दिखाई देता है, that is signified as YT. Okay, similarly stress distribution diagram के लिए भी सेम है. जो नीचे आते हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस के लाइन के नीचे स्ट्रेस इन टेंशन आएंगे, न्यूट्रल एक्सिस के लाइन के ऊपर स्ट्रेस इन कंप्रेशन आएंगे. और जो कंप्रेशन पे आते हैं वो नेगेटिव होगा. कंप्रेशन पे मतलब इट इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर नेगेटिव आएंगे. टेंशन पे पॉजिटिव. यू हैव नेगेटिव हियर एंड पॉजिटिव. सो फ्रॉम हियर the flexural formula that you get is m by I equals to sigma by y equals to E by R. ये इसको हम flexural formula बोलते हैं. और जो यहाँ पर m है, this is the moment of the bending moment of the beam, and I is the moment of inertia of the beam, sigma is the stress, y is the distance from the neutral axis, E is the Young's modulus, R is the radius of curvature. यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, this is the radius of curvature. From this जहाँ पर से bend हो रहा है वो point से हम radius of curvature लेके जाते हैं. Okay, so if you see here, this is the flexural formula. M here is the maximum bending moment, I is moment of inertia, sigma bending stress, y is the distance of the layer from the neutral axis, or E is Young's modulus, R is radius of curvature of the bend up beam. So this is the significance of all the significance for all this flexural formula. Now अगर आप if you want to calculate a maximum compressive stress, आप compressive stress फाइंड करना है, मतलब compressive stress ये पोर्शन का sigma c फाइंड करना है. if you have to find sigma c, then you have to use this formula sigma c. From this flexural formula you get sigma c equals to m by I into yc. So please remember this formula. We will be constantly be using to find the
solve the numerical. Okay, so now if you want to, similarly, if you want to find tensile stresses, then you have to go to the tensile stress, and जो भी आपको distance stresses जो भी लेना है सब आप tension के ही लेंगे. तो sigma t will be equal to m by I into yt. So yt here is the distance of the layer from the neutral axis, और जो ये layer है, this layer will be in a tension zone. Okay, so sometimes the flexural formula can also be written in this manner: mr by I equals to sigma max, y max equals to er, और यहाँ पर mr जो है that is equal to moment of resistance. Okay, now here moment of resistance. Now looking at this diagram here, this is a stress distribution diagram. Now in stress distribution diagram, neutral axis के ऊपर you have a compression zone, neutral axis के नीचे tension zone you have, right? So for this compression zone here, the centroid of this compression zone from the top of this compressive zone lies at a distance of y by c. उसका जो centroid lie करते हैं from this base of this compression zone, it lies at y by c. Because ये triangular in nature है, तो triangle का कहाँ पर lie करते थे? h by 3, right? Similarly इसके भी यहाँ पर y by 3 पे lie करते हैं from this base here. Similarly ये tension पे it will lie at a distance, उसका centroid will lie at a distance from its base at a distance yt by 3, और ये yt जो है it is the height of this triangle in tension zone. Okay, so हमें ये stress distribution diagram और नहीं I mean हमें ये बीम को इक्विलिब्रियम पे लेने के लिए दोनों जो टेंशन एंड कंप्रेशन जो लग रहे हैं उन दोनों को हमें इक्विलिब्रियम पे लेने के लिए it should come equal to 0. So tension is positive, compression is negative. So positive T minus C should be equal to 0. अगर हमने यहाँ से properly equate किया तो we will get T equals to C. So when this happens, then only our beam will be in equilibrium position. Okay. Now अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है T is equal to C. ये दोनों equal है. So C and T are two equal, unlike parallel and non-collinear forces. Okay. Hence they form a couple. वो लोग equal है, but they are unlike parallel and non-collinear forces. Okay. उनका intensity same है, but they are not of the same sign. They are of different signs. So they form a unlike parallel and non-collinear forces. तो जब ये होते हैं तो these are known as a couple. Okay. So as you can see that the distance हमें पता है कि from the base at distance yt by 3 उसका centroid lie करते हैं in tension zone, and at a distance yc by 3 from the base of this compression triangle here उसके centroid yc by 3 पे lie करते हैं. Now in between का जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक का distance जो है, यहाँ से यहाँ तक का distance जो है, this distance here is signified with a symbol Z here, and this is known as a lever arm. Okay, and so the moment of a couple will be equal to, in compression zone it will be equal to C into Z, and in tension zone it will be T into Z. Okay, and this moment of resistance of a beam is denoted by mr. तो हम उसको जो यहाँ पर moment of couple है, ये moment of couple को ही हम moment of resistance of a beam बोलते हैं. Okay, I hope this is clear. Now if we have to draw a bending stress distribution diagram for a symmetrical sections, now as you can see ये यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, these are all symmetrical sections. What do you see here? You see a square, then rectangle, circle, symmetrical eye section,
सिमेट्रिकल चैनल सेक्शन। तो ये सब क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल सेक्शन हुआ। तो ये सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम विल कम इन दिस मैनर, ओके, वेयर सिग्मा सी विल बी इक्वल टू सिग्मा टी, बिकॉज उन दोनों का डिस्टेंस भी सेम पे लाई करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से राइट उनके बीच से जाते हैं, तो वाई सी विल बी इक्वल टू वाई टी, एंड बिकॉज ऑफ दिस stress produced in compression will be equal to stress produced in tension. Now next, if we see for unsymmetrical sections, यहाँ पर we have T section as unsymmetrical T section, unsymmetrical I section, unsymmetrical L section, right? So यहाँ पर inverted unsymmetrical inverted T section we have, right? यहाँ पर angle sections we have. So for this unsymmetrical section, the bending stress diagram can be drawn in this manner. तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि compression zone पे पॉजिटिव आ रहा है और टेंशन पे नेगेटिव आ रहा है, राइट? सो stress produced in compression is not equal to stress produced in tension, right? So उनका, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको distribution भी, the triangle formed in this compression zone is bigger and the triangle formed here in this tension zone is smaller, so they are not equal. So we can draw the bending stress distribution diagram for in this manner. Now next is section modulus. Now from this flexural formula we can find moment of resistance as m equals to I by y into sigma, right? Now this I by y here, so this I by y is equal to z. Z here is a section modulus, okay? So z is equal to I by y और उसका unit will be equal to mm raised to power 3. कैसे आएंगे? Moment of inertia का unit mm raised to power 4 है, y is a distance, so distance mm पे आएंगे, so आपको ये दोनों कैंसिल किया तो you will get mm raised to power 3. So section modulus is equals to I by y. So I by y. So this formula you can write it as m equals to z into sigma. You can also signify it in that manner. And अगर आपको section modulus about horizontal centroidal axis find करना है तो zx x axis के तरह से find करना है तो it will be equal to ixx divided by y max. Now here section modulus about not horizontal axis, this will be about vertical. Okay, so I made a typing mistake here again. So here it will be vertical centroidal axis. Now here section modulus for some important sections. So अगर आपको x axis से find करना है तो z x axis will be equal to ixx divided by y max, और हमें पता है ixx along this rectangular section will be equal to bd cube by 12 by y max, जो यहाँ पर सेंटर से जाते हैं उसका डिस्टेंस विल बी d by 2. तो फ्रॉम हियर यू विल गेट bd square by 6. So you will be getting bd square by 6. Similarly for y section you will get db square by 6. Okay, and for a circular section you will be getting, because circular section is a symmetrical section, तो symmetrical section के लिए दोनों ही साइड पे आपका section modulus will be equal to pi by 32 d raised to power 3. Okay, just remember these formulas. Then for a hollow circular section it will be pi by 34 d raised to power 4 minus small d raised to power 4 divided by d. Okay, and next you have values of maximum bending moment for different loading condition. Up now here if you find this is a simply supported beam here and this beam is under point load action, right? यहाँ पर point load आ रहा है, तो आप अगर यहाँ पर C point पे maximum bending moment find करते हो, if you find it then it will be coming equal to WL by 4. Similarly for a simply supported beam carrying a UDL throughout its length, यहाँ पर moment maximum moment will come again at this C point, so here you will get WL square by 8. For a cantilever beam free end पे point load आ रहा है, तो अगर आपने यहाँ पर maximum bending moment find किया तो maximum moment will come at A point and वहाँ पर it will be equal to WL. Okay. Similarly for a cantilever beam carrying a point load UDL throughout its length,
उसका maximum moment will come at this fixed again, which will be equal to WL square by 2. Okay, so remember this formulas. If you want to cross check it, तो आप जैसे हमने moment find किया था bending moment in unit number 4, वैसे ही आप कर सकते हो. Okay, so you can cross check it. Otherwise, you directly remember these values. Okay, so I hope this is clear. This is the end of it. So from next session onwards, we'll start with the numerical. Please remember all the formulas that we saw in this session. So I'll see you in next session.